A used eraser in a samosa. A cockroach in an omelette. Live worms in Maggi noodles. These are just some of the numerous cases we encountered while reporting this story. In each case, the consumer was absolutely aghast by how their grievances were redressed. Rajkumar Gautam, an advocate by profession and a resident of Dadri in UP, purchased samosas for his family from a sweet shop in his neighborhood. On returning home, he alleges that he found an eraser in one of the samosas. What followed was a long legal battle against the sweet shop authorities after Rajkumar claims they refused to even hear him out. मैं समोसा लेने गया था, 9 अक्टूबर 2021 की बात है। तो मैंने 13 समोसे परचेज किए, उन्होंने मुझे बिल भी दिया था। जब मैं घर लेके आया समोसा, तो वो एक समोसा बच्चे के पास गया। बच्चे ने जब समोसा तोड़ा तो गर्म तो था ही, तो बच्चे बोला कि बड़े पापा इसको ठंडा कर दो। जब मैंने लिया तो मुझे उसमें कुछ अजीब सी चीज दिखाई थी, वो इरेजर थी। मैंने उसको अलग किया तो वो लगभग आधा इंची तो मोटाई थी उसकी, नीचे से ट्रायंगल शेप में थी, ऊपर से अंडाकार सी शेप उसकी बनी हुई थी, जैसे घिस के बच्चे कर देते हैं ना इरेजर, उस तरह की थी। तो मैंने फिर उसको एक बार समोसे के साथ फोटो लिया, फिर उसको अलग निकाला, उसके साथ लिया, फिर मैंने एक बार उसको साफ किया। डाउट कि हो सकता है कि कुछ मेरी ही मिस्टेक हो, तो फिर मैं श्योर हुआ धोने के बाद कि वो इरेजर ही थी। मैंने ये सारी कंप्लेंट उनको भी की थी, लेकिन उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने जो बिल का नंबर था उनको कॉल की, लगभग 7:15 बजे के आसपास मैंने कॉल की, उनको बताया कि भाई आपके समोसे में ये प्रॉब्लम है। तो बोले नहीं, वो समोसा तलते समय आलू काला हो गया होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कि आप एक बार देख लो, मैं ले आता हूँ। बोले नहीं, हमें देखना ही नहीं है, आपको जो करना है वो कर लो, हमारे यहाँ इरेजर का कोई काम नहीं होता। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया। उसके बाद मैंने डीएम गौतम बुद्ध नगर और अन्य अधिकारियों को ट्वीट भी किया विद फोटो, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने 11 अक्टूबर 2021 को उनको लीगल नोटिस भेजा। उस पर जब उन्होंने रिप्लाई ये दिया कि वो मेरे घर पे आए, तो वो मेरे घर पे आए और उन्होंने मुझे 5000 रुपये ऑफर भी किए कि आप केस मत कीजिए, मैं 5000 रुपये आपको दे रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे केस करना है, क्योंकि आप पब्लिक के साथ गलत कर रहे हो। ये इरेजर अगर बच्चे के पेट में जाती तो क्या हो सकता था, वो मुझे पता है। तो मैंने उनको मना कर दिया। उसके बाद फिर मैंने कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया, तो केस चल रहा है। मैंने इनके अगेंस्ट एक आरटीआई भी डाली थी कि भाई इनका आपने कोई सैंपल वगैरह का भी भरा है। तो मुझे उस आरटीआई का जवाब ये आया खाद्य विभाग से कि इनका गुलाब जामुन का एक बार सैंपल भरा गया था, उसमें उनका गुलाब जामुन अधोमानक पाया गया, यानी कि जो मानक होते हैं उससे नीचे। उसकी वजह से उनको 3 लाख का फाइन हुआ है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं कोर्ट में फाइल कर चुका हूं और लगभग फाइनल स्टेज पे है ये केस। In another case, Yogesh More, a Rajdhani Express passenger, found a cockroach lurking in an omelette served to him by the IRCTC, the Indian Railway Catering and Tourism Corporation. When he tweeted about the incident, Rail Seva, the online support service for railway users, responded by saying, "Inconvenience regretted. Sir, kindly share PNR number and mobile number in direct message." But little happened after this. Most of these pleas usually fall on deaf ears. In another case, Chennai resident Varun Kamdar alleges he found live worms in Maggi noodles. Kamdar shot this video as soon as he spotted the worms. Kamdar contends that when he complained to Nestle about it, the officials came to his house, took away the sample packet in the name of investigation and gave him a courtesy Maggi noodles packet. He alleges that he was not given an acknowledgement slip by Nestle when they took away his only piece of evidence. जब शाम को मैंने मैगी का पैकेट खोला फॉर माई सेल्फ, मेरे खुद के लिए मैंने बनाने के लिए जब पैकेट खोला, यूजुअली मैं पानी पहले उबाल के उसमें केक रखता हूँ और नूडल का जो केक रख के आई बॉयल इट एंड देन आई ऐड द टेस्ट मेकर एंड देन आई स्टर इट एंड आई हैव इट। तो उस दिन जब मैं पानी रखने के बाद जब नूडल का जो केक रखा मैंने पानी में, तो अचानक से मेरी नज़र उस केक पे पड़ी और मुझे 3-4 वर्म्स वो घूमते हुए दिखे, लाइक दे वर लाइव, दे वर नॉट डेड, तो वो मेरे को लाइव मूव होते हुए दिखे।
तो अचानक से मैंने मतलब गैस टर्न ऑफ किया एंड तवा को उतारा नीचे। टेस्ट मेकर को ऐड नहीं कर पाया मैं, उसके पहले मैंने ये नोटिस कर लिया था। एंड फिर मैंने इमीडिएटली फ़ोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक की एंड इमीडिएटली आई जस्ट ट्वीटेड टू नेस्ले रिगार्डिंग दिस। मैंने नेस्ले को ट्वीट किया, मैंने FSSAI को टैग किया, क्योंकि आई हैव बीन अ वेरी ओल्ड कस्टमर ऑफ मैगी। बचपन से हम सब खाते आ रहे हैं एंड इट वॉज अ न्यू थिंग फॉर मी, इट वॉज वेरी शॉकिंग एक्चुअली। अगले दिन मेरे को मैसेज आया था कि उनके एग्जीक्यूटिव मुझे कांटेक्ट करेंगे, बट उस दिन शाम को शायद मेरे को कॉल आया था दिल्ली से एंड दे वर अपोलोजाइजिंग। नेस्ले की टीम 23 तारीख को शायद आई थी। उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया था कि मतलब हम आने वाले हैं, तो वो आए और उन्होंने पुराना जो रैपर है वो कलेक्ट करा। उन्होंने बताया कि वो जो पुराना रैपर हमारे पास है वो R&D और फैक्ट्रीज़ में भेजेंगे, ताकि वो लॉट से पता चल पाए कि उस लॉट में कोई मिस्टेक तो नहीं है। मतलब उन्होंने लॉट नंबर नोट करा। फिर टेस्ट मेकर और जो रैपर है बाहर का, दोनों कलेक्ट करने के लिए एक चेन्नई के डिस्ट्रीब्यूटर हेड आए थे। ही कलेक्टेड इट एंड इमीडिएटली ही टुक इट, एंड बिफोर दैट दे हैड प्रोवाइडेड मी पैकेट एज रिप्लेसमेंट एज अ कर्टसी, विच आई डिनाइड फर्स्ट, बट उन्होंने कहा था कि नहीं, वो उनकी मतलब प्रोसीजर है एंड एज अ कर्टसी दे गेव इट टू मी। आई वाज क्लियरली डिनाइंग फॉर इट, बट eventually I accepted it. The Maggi brand of seasonings, soups and stocks is one of Nestle's billion-dollar brands. We wrote to Nestle India with specific queries on what action was taken following Kamdar's complaints. We asked why Nestle took away the sample packet, which was the customer's only piece of evidence. This is Nestle India spokesperson's response to the probe's queries. We have met Mr. Varun Kamdar and are in touch with him. We have collected the wrapper of the product as per our protocol and are closely investigating the issue. Once we have the necessary information, we will communicate transparently with him. The FSSAI, the Food Safety and Standards Authority of India, India's food regulator established under the Food Safety and Standards Act of 2006, has consistently drawn flack for not doing enough testing and for lacking transparency in its operations. Over the years, national and state food authorities have seen a rise in consumer complaints across India. Very frequently, related to contamination and related to some adulteration, misbranding, substandard foods, the complaints are coming to our department from various social media platforms, and also on my toll-free number. I mean the department's toll-free number. I have to say this thing: if there is a complaint related to contamination or any in contamination of the Act, rules and regulations met there under the FSS Act, or adulteration, in such complaint, the FSOs are going and inspecting the premises, lifting samples of the food articles, related food articles, if it is mentioned in the complaint or related to the complaint, or if there is some ingredients complaint, I mean the food article. So this is all, after lifting samples, we are sending it to the food analyst. Food analyst has to analyze the sample and give the report within 14 days. If it is contaminated, accordingly, whatever the result, I mean the analysis report, accordingly, food safety officer and designated officer, who is the administrative officer of the district, I mean the supervising the food safety officer in their respective districts, they have to go accordingly for the case. In fact, under provision of Food Safety Standard Act, rules and regulations met there, and these all food businesses concerned to the food, if it is being contaminated or adulterated or substandard or in contamination of the Act, or even whatever the even extraneous matter is involved, in that case, all concerned will be held responsible, even the at the manufacturing level to the retail level, even the in between the distribution and the supplier firm also. Everyone, we are investigating the case files and finding out the offenders held responsible at the time of the commencement of the I mean the offense. Everybody is liable
and responsible. Under sections 26 and 27, manufacturers are also liable for each type of contamination in the regulation, and retailer is also liable. Millions of cases of foodborne illnesses are reported in India every year. There have been concerns that the food industry has too much influence over the food regulator and that the agency may only sometimes act in the public interest. Most people who have taken their fight to consumer complaint portals, government food safety helplines, district consumer dispute redressal forums, or for that matter even the consumer courts say these forums are not consumer friendly. Justice often gets caught between corrupt food safety officers and the influential food industry, rendering the consumer helpless and vulnerable.